नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वास्थ्य श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपके चैनल। तो आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है ले मेरिडियन में बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, इंटरनेशनल रियल एस्टेट एक्सपो IREX 2023। तो उसी को हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ले मेरिडियन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यूज़फुल रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पर। एंड ग्लोबल लेवल पर ये इवेंट होने वाला है। 25 कंट्रीज़ इसके अंदर सेम रूफ के नीचे बैठने वाली है। तो देखते हैं कैसा है इवेंट। तो अब हम आ चुके हैं ले मेरिडियन होटल के अंदर, आप देख सकते हैं। एंड रियली दिस इज़ अमेजिंग। मतलब जो ये है ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे मैं पहले भी आया था जब दुबई का इवेंट हुआ था रियल एस्टेट वाला। तो उस टाइम पे वो हम लोग 12th फ्लोर पे गए थे, बिकॉज वो इवेंट 12th फ्लोर पे था। तो उसकी भी मैंने वीलॉग डाल रखी है, अब आई सेक्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो ये जगह मेरी हमेशा से फेवरेट रही है ले मेरिडियन होटल के अंदर, जो कि नई दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। ये भी काफ़ी अच्छा है। इस बार जो इवेंट है IREX वाला 2023, दैट इज़ इन बेसमेंट। तो हम उस तरफ जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं सामने सॉर्वेरियन हॉल के अंदर है इंटरनेशनल रियल एस्टेट एक्सपो 2023। तो ये कुछ स्पीकर्स हैं, आप सामने देख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स जो 25 कंट्रीज से यहाँ पे आ रखे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ से अलग अलग रियल्टर्स, डेवलपर्स आ रखे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस 25 कंट्रीज़। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये लॉबी है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। अब ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है ले मेरिडियन का। और ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है इंटरनेशनल रियल एस्टेट एक्सपो 2023 के अंदर। तो ये बेसिकली गाइड है IREX के पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कैरिबियन आइलैंड, EB5 USA, यूरोप में ऑस्ट्रिया, सिप्रस, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, बेल्जियम है आई गेस, ओके। एंड ऊपर दुबई वगैरह आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट के दुबई, बहरीन, कतर, यूरोप में माल्टा, मोनाको, देयर आर मैनी कंट्रीज यू कैन सी ओवर देयर। यूनाइटेड किंगडम्स, 25 कंट्रीज एज आई सेड। एंड ये बीच में मैं ब्रेक पे गया था तो आई सॉ जेरी, सो आई रिकॉर्डेड इट। सो अब हम जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ। तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्पीकर आए हुए हैं। तो वो अमेरिका में रियल एस्टेट कैसा काम करता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं उसकी छोटी सी झलक आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि वो कैसे बता रहे हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर बेटर। That's in a senior position, a senior loan, right? So it means if the developer defaults on this loan that we're giving them, either they don't pay the interest or they don't pay the funds back at the end of the loan, we have the rights to take that property from them, and we have the first rights to do so. They're injecting $583 million of capital themselves into this project. That is a lot of incentive for them not to default on this loan and have us take it from them on behalf of our investors, clearly. And so it's safeguarding the EB5 investors and their $800,000. We are expecting to sell, we've already sold, they put 17 of the homes on the market, they sold 16. They just released another 12 last week. They expect to तो बेसिकली अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये अमेरिका में एक्चुअली एक प्रोग्राम है EB5 करके, इमिग्रेंट्स के लिए अमेरिका के अंदर। तो उस प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, बिकॉज अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो वहाँ पे कैसे रियल एस्टेट काम करता है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया था कि हाउ इट वर्क्स इन अमेरिका, एंड कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग सोच रहे हैं ओवरसीज़ में निवेश करने का, जैसे कि अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में। सो अब आप सामने देख सकते हैं काफ़ी सारे बैनर्स लगे हुए हैं अलग अलग कंट्री के डेवलपर्स के थ्रू, लाइक उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में कि कहाँ, मतलब कैसे कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अलग अलग कंट्रीज़ में निवेश करने के लिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस इवेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस किए थे अमेरिका के जो हमारे स्पीकर सामने हैं, इनसे हमारे इंडियन रियल्टर्स ने, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
आप वो देखिए आगे। Check out our website. Our website's eb5united.com. It's kind of a one-stop shop for EB5. We really have everything from A to Z about the program, step by step, fiduciary to make sure to protect our investors, as well as having a third-party audit as required by the law. So having said all this, is it 100% secure? Can it be said that the investors' money will be 100% secure, 90% secure, 80%? To what extent you assure? If we say 100% secure, then you would get denied by the USCIS for your green card, because it's technically called an at-risk job creation program. So by at-risk, it doesn't mean it has to be risky. So the way that we secure the investment is how we structure it. So what I was saying about like the project, we're putting $400 million in a senior first position loan, and then we have $583 million of developer equity. That's how we're securing it and trying to make it as safe as possible for the $800,000. There's other projects you'll see, maybe it's a senior loan for half of the money, and then EB5 for 30% of the money, and then 20% developer equity. It means there's just less money behind you in the capital stack that needs to be lost before you could lose money as an investor. And so it's the structuring of the deals, and that's why really you have to evaluate every deal in EB5 separately. Of course, you need to look at a group like us and look at our track record, history, what we're delivering to investors, our underwriting capabilities, what our experience is in the real estate market, because this is a real estate investment. But at the same time, you have to look at every deal, even our deals. You got to look at them individually. They all have different aspects to them that are going to secure your investment. So can we just take one more question if it's okay? Yeah. And then you can connect offline. He had raised the one in the yellow shirt. Yeah. Yellow shirt. Sir, unhone pehle raise. Good morning, sir. We have one question is there, sir. In India, the RERA compliance is there. There is the builder not to use 30% of the admin part and all the construction part after the 70% after the building part. What about the USA builders there? Right now, the concerning that which body has been operating the USA part, the government body. In India, the RERA compliance is there. You're saying that the developers can't use. Yeah. What are you saying? What is the interest of the money we have deposited for interest of the money we have deposited in the USA part for the what is the investment get the benefit on that? If the builder is in default for the not completing their project in within time frame, so what is the rule of that the USA country? Sorry, I'm not understanding the question. What is the compliance of the US? Yeah. The compliance rules. Yeah. You're saying for construction or for use of the funds? I redefined the question. Okay. Sorry. So basically in India, as you do any project, so there's a regulation which says that 70% of the proceeds has to be deployed in the project, and the remaining 30% can be used for the overhead expenses. So his question, do you have something of that sort in USA? Who's a regulator and what is the threshold? Gotcha. Okay. Well, there's not necessarily something just like that, but what we're doing before we get into the project is we're doing underwriting on the developer's construction budget and schedule. And so we're looking at, and as lenders, obviously there's different ways that people are going to allow developers to take construction draws. Banks sometimes will make developers put सो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, बिकॉज ये काफ़ी लंबी डिबेट चली थी, अराउंड 1 आवर की वीडियो बन गई थी, तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा रेरा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए गए थे। जैसे हमारे यहाँ पे रेरा मॉनिटर करता है कि देयर आर सम लॉज विच डेवलपर हैज़ टू फॉलो सो दैट जो भी कस्टमर के पैसे लग रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे लग रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक वे में प्रोसेस होकर ही डेवलपर के पास जाएं, जैसे कि रेरा हमारा इंडिया में काम करता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हम लोग निवेश करते हैं, गुड़गांव रियल स्टेट हो या फिर एनी स्टेट इन इंडिया, अगर हम किसी भी स्टेट में पैसा लगाते हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ के रियल स्टेट में अगर जो प्रोजेक्ट है, अगर वो रेरा रजिस्टर्ड और रेरा अप्रूव्ड है, तो उसके ऑडिट्स होते रहते हैं
पर स्टेज, जैसे कि अगर वो एक्सकवेशन स्टेज पे है तो ऑडिट्स वगैरह होते हैं, अगर वो सुपर स्ट्रक्चर के स्टेज तक पहुंचता है तो ऑडिट्स होते हैं, चेकिंग्स होती हैं, क्वालिटी चेक्स होते हैं। तो अलग अलग स्टेज पे जब ओसी आता है तब भी चेकिंग होती है। तो देर आर सर्टेन स्टेप्स वेयर ऑडिट्स आर डन बाय द गवर्नमेंट रेरा, मतलब बेसिकली रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। जो कि रेरा एक्ट भी था तो पास हुआ था, उसके बाद से यही हुआ था। रेरा एक्ट का मतलब ही ये था, जो 2016 में पास हुआ था, उसका मतलब ही ये था कि इन्वेस्टर्स के पैसे बचाए जा सकें, बिकॉज इससे पहले काफ़ी सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते थे रियल स्टेट मार्केट के अंदर। और काफ़ी सारे आपने देखे हुए होंगे, नोएडा रियल स्टेट में काफ़ी सारे डिफॉल्टर्स भी थे कि प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको प्रोजेक्ट बना के देंगे, पर पैसा लेके बिल्डर भाग जाता था। तो ऐसे सिनेरियोज ना देखने को मिले, दैट्स वाई बहुत सारे रेरा में लॉज बने थे ऑडिट्स को लेके। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे हमारे इंडियन रियल्टर्स ने, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये क्वेश्चंस किए गए थे यूएस के जो सामने स्पीकर हैं उनसे, कि ऐसा कुछ लॉ वहाँ पे है या नहीं है। तो अगर इसके बारे में जानना है कि भाई उन्होंने क्या आंसर दिया, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं आपको सही तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, बिकॉज 25 कंट्रीज आई थी एंड 25 कंट्रीज से बहुत सारे स्पीकर्स आए थे। तो हर एक का डिबेट अगर मैं शेयर करने लगा तो वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, अगेन आई एम सेइंग। तो मैंने शॉर्ट में रखने की पूरी कोशिश करी है। तो चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के रियल स्टेट नॉर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं। और एक, मैं सही बताऊं तो टेंटेटिव तरीके से मैंने पूरी वीडियो कवर करी है, एक ओवरव्यू है कि ग्लोबली कैसे रियल स्टेट मार्केट काम करता है। तो नेक्स्ट जो आप देखने वाले हैं डिबेट, दैट इज़ फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया रियल स्टेट। सो उनकी रियल स्टेट की मतलब लाइक जो मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी और काफ़ी अच्छा था। मतलब जो डेवलपर आ रखे थे यहाँ पे वो रेजीमैक्स करके हैं, एंड उनसे काफ़ी अच्छे मेरे बॉन्ड्स भी बन गए थे, बिकॉज हमने उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से बात करी। दे वर वेरी हम्बल विद अस, एंड उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई भी हमें कि फाइनेंसेस कैसे काम करती है ग्लोबली लेवल पे, और कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। एंड वी मेड वेरी ग्रेट फ्रेंड्स देयर, एंड काफ़ी सारे लोग हमारे दोस्त बने, कतर से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से। तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी नाइस इवेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनकी आप सामने देख सकते हैं, कैन डॉट्स करके हैं डायरेक्टर रेजिमैक्स ग्रुप के, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड डेवलपर हैं। तो उनका उनका ये प्रेजेंटेशन था, तो उसके भी कुछ मैं ग्लिम्स आपसे शेयर करना चाहूँगा, तो आप वो भी डिस्कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इवेंट चल रहा है और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम ऐसी यूजफुल वीडियोस रियल स्टेट से रिलेटेड, अब तो ग्लोबल लेवल के रियल स्टेट से रिलेटेड हम लोग अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन रियल स्टेट से रिलेटेड लेके आते रहें। बिकॉज हमारा मोटिव क्या है, सेलिंग इज हेल्पिंग, अलॉन्ग विद हम लोग ये भी कहते हैं, if you want to upscale in the real estate market, you have to connect your root with us. So definitely subscribe करें so that you will stay connected to our roots. तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो ऑस्ट्रेलियन डेवलपर हैं कैन डॉट सामने, तो उनकी कुछ कुछ डिबेट है। उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट शेयर करे हैं, 6 की एलिमेंट्स जो कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छे आपको प्रॉफिट दे सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिकली। तो उन्होंने ये शेयर करे हैं, आई मस्ट से आप सभी को ये ज़रूर देखना चाहिए। लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो भाई डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को आगे भी देखते रहें, बिकॉज काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं ग्रो करना अपना रियल स्टेट एम्पायर, नॉट जस्ट इन वन स्टेट, नॉट जस्ट इन वन कंट्री, बट इंटरनेशनली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। You can use to assess the various investment opportunities that you might be in front of you. Is that okay? Yeah? Okay, cool. All right. As property investors, you know that there is only one reason and one reason only that property ever increases in value. What's that reason?
There is only one reason that a property will ever increase in value. What's the reason? Sorry? Demand. Demand is your oxygen as an investor, guys. It is absolutely the first thing you should ask. Who cares what the property is made from? Who cares where it's located? Who cares what it looks like? It makes no difference. You're not going to live in it. It's an investment. And so the thing that you must determine before you even begin discussing any deal is there a demand for this investment? If you cannot be confident that there is demand today and ongoing into the future, cut that deal away. Walk away from it, don't waste your time, there'll be other deals that you can look at. You are in the centre of the investment universe right now. There are companies from all around the world. We're all here talking to you. There's investment opportunities everywhere. The first thing you must do to satisfy yourself is that there is demand for the investment that you're being presented. After you've established that, then most people would consider, if you're looking to select an investment property, what's one of the first things that you would consider? What's one of the first things that most people consider? Location. Location. Who agrees location is probably really, really important, yeah? Okay? But I just said, you're in the centre of the investment universe. Timing. Guys, property markets operate on a cycle. There are peaks and there are troughs. Too often people get excited, buy at a peak, and then when things go wrong, they sell in a trough, and it's an absolute recipe for losing money. Okay? So what you must determine when you're looking at the investment, you're satisfied that there is demand, but am I investing at the right time in the market? And you want to be investing when the market is just beginning. You want to be at the bottom of the cycle so that you capture the uplift. Does that make sense? True. And the sooner you can capture that uplift, you create equity. Equity is what you can use to reinvest in future properties without having to put your own money in. And if you can invest without having to use your own money, that's how you get real results going forward. Okay? So timing is the next thing to consider. After timing, we then think about the actual location. But I want you to think about location not from your perspective. You may have, living here in New Delhi, a particular style of life. You might like to live in a particular way. But if you're investing in a property, regardless of where that property is in the world, it's not for you to live in. It's for someone else to live in. And so as a property investor, when you're buying a property, it is not a home. It's not your home. It is simply a product. A product that you intend to offer for sale or lease to a customer. And what you must think through when you're looking at an investment property is who your customer is going to be. What your customer's desires, wants and goals are. What's going to maximise your investment return from your customer's perspective. Does everybody follow that? Customers are critical in this business. Property is a people business. It's not about anything else. It's not bricks, mortar, or any of that rubbish. It's all about people. And so you need to know who your customer is going to be. After that, we then want to talk about price. Now, I know whenever I've met somebody whose ancestry is Indian, the very first thing I'm asked for when I tell them the price of the property, what's the first thing I get asked for? No, I tell you, the price is $100. What do you want? You want a discount, yeah? Guys, I'm here in India. They've come to my stand. They haven't even asked me the price. They're asking me how big a discount they're going to get. I mean, it's like a national sport for people from India to try and screw the best discount you can get. All property, all residential property, regardless of where it's located, if you're going to use bank funding, if you're going to maximise your investment through leverage, your bank will not care what price you pay for the property. The price is an irrelevant number to the bank. What the bank is actually concerned with is the property's value. And in order to determine the value, they will send somebody to the property, and that person will be a licensed quantity surveyor or valuer, and that person will write down, in his opinion, what the value is, and that will become the value that the bank accepts. The price could be whatever it is, doesn't matter. The bank will only lend against what the valuer says the property is worth. Does that make sense? Yeah? Okay. All residential property is valued based on the last comparable sale, the last transacted result.
So if a property in this street has sold for 500, the property next door, if it is exactly the same, when the valuer looks at it, he will value it at 500, yeah? So if you were to buy a property for that second property for the price is 500, and you now ask for a discount, how big a discount would you like? How big a discount would you like, sir? Don't be greedy. 100? 100? You buy a $500 property for $400. That's a good discount, yeah? You'd agree. All right. So that's a pretty good result from his perspective, isn't it? But the bank goes to the property now. The valuer goes to the property, looks at that contract for sale, and what is the property now valued at? 400. So the very first thing we do as an investor is devalue the very asset that we're looking to invest in. And the golden rule, if you listen to Warren Buffett, of investment is don't lose money. All right? So I'm going to give you a different perspective. You must understand that the value of the property that you're purchasing is very, very close to the price that's being offered. Those things have to happen through due diligence. Yeah? You can determine that. But instead of negotiating for a discount, guys, come and talk to us about a deal. What if we could pay for things out of our pocket that you would ordinarily have to invest your money in? Like legal fees, like taxes, like travel expenses. I've had somebody come to me and say, Ken, I'll buy your property, but if you give me a brand new car. I'm happy to do that. Discount to me makes no difference, but it makes a big difference to you. Yeah. So when you're negotiating, what you want to try and do is rather than negotiate a discount, get the same value as a discount by negotiating a better deal and have the developer incorporate into the purchase price those things that you would ordinarily have to fund out of your own pocket. Does that make sense? Yeah? This will dramatically improve your investment results, guys, promise you. And then the last thing, but the most important thing we have to do when looking at selecting an investment or getting involved in an investment property is understanding what the risks are. And there are always risks. Yeah? There are always risks. So what can you do? And what I suggest to my investors do is that they start with a white blank bit of paper. They draw a line down the middle, and on the left-hand side, they write down all the risks that they can think of if they bought an investment property. I.e., a risk. What happens if the property market goes down in value? That's a risk, yeah? What happens if I can't get a tenant? Yeah? What happens if whatever the other problems are? And rather than just waiting for it to happen, because heaven knows it will probably happen, have a strategy for dealing with it before it does. So instead of running around like a chook with its head cut off in a storm, what you can do is something has happened, i.e. I can't get a tenant, I go to my drawer, I open it up, and there's my plan. Can't get a tenant, my strategy is this. And you implement your strategy in a cold, calculated way without panicking. If you panic, you'll lose. Does that make sense, everybody? So guys, I consider this to be the 6 keys to investment in property. They said this title was investing in Australian property. I don't think that's necessarily true. I think it's investing in any property, anywhere in the world. All of these things, all of these points, demand, timing, location, price, deal and risk, they're very simple. You can remember them, you can write them down, you can check every single one of them in line in every investment you go to, and at the end of the day, you can actually work out which one was the best one for you. Right? Hopefully I've given you a tool that can help you make better decisions. Now, I'm here representing Resimax Group and Resimax. So basically that was it, and काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है इन्होंने अबाउट कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके थ्रू प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट करती है, एंड कौन कौन सी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी अक्रॉस एनी नेशन. तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है. एंड ही इज़ डेवलपर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न. तो वहाँ पे इनका एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है एन्सबरी. ओके, दैट इज एन्सबरी. तो एन्सबरी में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है. तो उसके अंदर भी आप अगर निवेश करना चाहें तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और उसके थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा बिकॉज इनसे काफ़ी अच्छी हमारी बात हुई थी. एंड इन्होंने अपना एक चैनल पार्टनर का मीटिंग भी रखा था द इम्पेरियल होटल के अंदर, विच इज़ इन जनपथ, न्यू दिल्ली. तो वहाँ भी हम लोग गए थे नेक्स्ट डे, इस इवेंट के अगले दिन. तो रेजिमैक्स जो ग्रुप है जिनके ये डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें स्पेशली बुलाया था कि आप आइए, देखिए,
हमारा भी एक्सपीरियंस कीजिए। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन दी थी अपने इवेंट के अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में, और जो कि एनियसबर्ग में है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम 3 CR। तो 3 CR को आप ऑस्ट्रेलियन करेंसी के हिसाब से, AUD के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना का इन्वेस्टमेंट बनता है इफ़ यू आर इंटरनेशनल इन्वेस्टर। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी हम लोगों ने भी लाइक गूगल मीट के थ्रू आपसे बात करने का सोचा हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते अगर आप, तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, हम लोग आपको कॉल कर लेंगे। एक टाइम हम लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है। रिगार्ड टू द एनी कंट्री, वी कैन टॉक अबाउट एनी कंट्री रियल स्टेट ओवर द व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप पे मैं हम लोग डिसाइड करके वीडियो कॉल कर लेंगे ओवर द गूगल मीट। तो गूगल मीट पे हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड बेस्ट टू गाइड यू सो दैट यू कैन अपस्केल बाय कनेक्टिंग विद अस। सो ये था इस प्रोजेक्ट रेजिमैक्स के बारे में, रेजिमैक्स का इंसबरी वाला प्रोजेक्ट के बारे में। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कैसे आप इस ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंस कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, छोटे मोटे मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग फाइनेंस रिलेटेड, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। यारा कैपिटल, उनके जो को फाउंडर है रवीन चंद्रा, तो उनके साथ मैंने काफ़ी अच्छी एक डिबेट करी थी, काफ़ी अच्छी हमने डिस्कशन करी थी बेसिकली रिगार्डिंग द फाइनेंस हाउ इट वर्क्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बारे में ये आगे का पोर्शन होने वाला है कुछ, तो उसको ज़रूर देखें बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है अबाउट द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, जो सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर निवेश करने की या फिर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में निवेश करने के प्रोसेस ऑल दो सिमिलर है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वास्तिक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपके लूट चैनल। तो आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए ओवरसीज, जो कि चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज में निवेश करना। तो उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। पर सबसे बड़ा पोर्शन आता है, उसके अंदर पॉइंट आता है कि निवेश करते वक्त फाइनेंसेस में कौन हेल्प कर सकता है। सो आई एम विद Raveen and he is from the Yaara Capital. So that is basically I guess a financing company. Yaara Capital. So we're a brokerage firm. Okay. We assist overseas investors procure finance in Australia. Okay. Now, unfortunately, overseas investors, there aren't any Australian banks overseas. So they need companies like us to structure, procure finance from search the market, because every investor has their own circumstances. Okay. You know, Indian requirements for people earning in Indian rupees, Singapore, China, Yeah. they all have different circumstances. So how many countries you are like working with? At the moment, we're lending to 18 countries. Okay. Pretty much all of the OECD countries. Okay. Indian nationals, Singapore, Malaysia, UK, USA. Okay. A lot of pretty much any country that is from overseas that is investing in Australia, we're able to procure finance for them in Australia. Okay. Not from their home country. Okay. In Australia. Okay. And some of the benefits that we were talking about earlier is finance in Australia, which is probably up to 30 years, Okay. regardless of age. Okay. Yeah. In some investment opportunities, even person who is like 17, 18 years old, I guess. Yes. And if he wants to, if that person wants to invest in the Australian real estate, Yes. but yeah, there are many parameters. So we will look forward to that parameters in the further video. So वीडियो में बने रहें, आगे हम कोशिश करेंगे कि और भी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जो इवेंट हो रहा है इस टाइम पे, आई एम राइट नाउ इन द इंटरनेशनल रियल एस्टेट एक्सपो 2023 एंड इट इज वेरी अमेजिंग इवेंट। अराउंड 25 प्लस कंट्रीज यहाँ पे आ रखी हैं, अपना प्रॉपर्टी शोकेस कर रही हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वीडियोस में कि काफी सारी यहाँ पे कंट्रीज ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है एंड दे आर एंगेजिंग एंड बहुत अच्छी एक हैप्पी वाइब है, काफी अच्छी वाइब है यहाँ पे एंड इट इज वेरी नाइस लाइक कैचिंग अप विद मैनी नेशंस एंड काफी अच्छा लगता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और थोड़ा सा मैंने एक्चुअली थोड़ा सा ना लाइक मुझे जो पसंद आया था, देखो इट्स वेरी हार्ड कि सबकी रिकॉर्ड करो वीडियो और आपसे शोकेस करो। तो अगर आपको और डिटेल में बातें करनी है और कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और मैं आपको थोड़ी ब्रीफ दे सकता हूँ और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ अदर कंट्रीज के बारे में कि वहाँ पे निवेश कैसे किया जा सकता है। एंड ही कैन ऑल्सो गाइड मी। एंड फाइनेंसेस में इनका बहुत ज्यादा लाइक आई गेस बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, सो ही विल ऑल्सो हेल्प यू इन फाइनेंसेस थिंग एज वेल। Would be a 30-year loan, right? Okay. So that is regardless of age. Okay. First things first. As long as you purchase for investment, Okay. The banks in Australia are very comfortable with giving you 30-year loans. Okay. Now, one of the things people ask me is there any, for 30 years is a long time. What if I want to pay off the property earlier? Okay. What do I do? Right? One thing in Australia, there is no early repayment penalty or partial repayment penalty. Okay. Even though you take the loan for 30 years, Okay. there is nothing stopping you from paying off the loan after 1 year. Okay. Or selling the property. There is no lock-in period. Okay, there is no penalty, lock-in period. Okay. No break cost. Okay. Okay? For any variable rate mortgage. Okay. Apart from that, Australia is one of the only countries in the world that offers interest-only loans Okay. to overseas investors. Okay. Meaning that you don't even have to pay the principal back. Okay. You only pay the interest. Okay. Okay, so that's one of the things that is very attractive to overseas investors because it gives them a lower installment. So the Okay. installment, let's just say it's $1,000 or $2,000 a month, it can drop by almost 1/3 Okay. or even half. Okay. So, as we know as investors, right, when our goal is not to pay the property off after 30 years. Okay. Our goal is to hold the property for as long as possible and earn a return in the capital appreciation. Yeah. That's the Australian market. It's very slow, Yeah. but it's very consistent. So unfortunately, a lot of investors, when they go into property, they feel that they want to pay off the property as fast as possible because they don't like the interest portion. Actually, the interest portion is the best part of the investment because at the end of the day, the rental will cover the interest. Okay. Yeah. And It is true. places like Australia, Even in India, it is also applicable in some parameters. रेंटल वैल्यू भी जो एक है, अगर आपको अच्छे एक इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, लेट्स सपोज आपको मिल गया है अराउंड 12% के आसपास मिल गया या फिर अराउंड मिल जाता है यहाँ पे, ऐसे मिल जाता है किसी किसी देखो इट डिपेंड अपॉन द सिविल एज वेल एंड इट डिपेंड अपॉन द बैंक एज वेल फ्रॉम विच बैंक यू आर getting the loan. Okay. Is it the main bank? Is it the third party bank? Okay. There are many parameters I'm saying. right. Okay. So हर एक बैंक के अपने अपने रूल्स हैं, पर अगर आपको अच्छे, अब देखो बात ये होती है कि ना आपको रेंटल जो आ रही है, if it is lower than your interest, yes, then you are kind of in the Negative. negative phase. That's right. Yeah, That's right. it's a depreciating value. So- I suppose, and it is a depreciating value for some months until you get your property 100% owned by you. not necessarily. Okay. Because what we're not realizing is, as you're talking about Australia, we're Oh, yeah. investing in Australia. Yeah, we're we are in- expecting the property to go up in value. Yeah. Okay, the loan amount stays the same, Okay. but when the property goes up in value, so does the rental. So does the rental. Yeah. So True. when the so There will maybe- be the stage Yeah. when it like beats the interest thing. yeah. I guess because it also happen in the India. Yeah. क्योंकि एक टाइम के बाद जैसे मान लो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज, Yes. ठीक है, आपने 50% ही दिया था, Yeah. 50 रुपीज दिए एंड बाकी पैसा सब कुछ लोन के हिसाब से आपने किया, 50% मान लो लोन किया, एंड जब वो लोन पूरा हो गया इंटरेस्ट के साथ भी एक टाइम के बाद, तो देन ओनली थिंग इज यू आर गेटिंग इज जस्ट रेंटल वैल्यू एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द प्रॉपर्टी. Yes. तो आपका उसमें से कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा उसके बाद. तो Yeah, वैसा यहाँ पे भी होता होगा आई गेस. अगर 30 इयर्स का है तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि उसको हम अगर कम इयर्स में करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है? That's possible. Is it possible? Yeah. When we say 30 years, that is the maximum. That is the maximum range. Yeah. And Okay. why we do 30 years is because we want to make sure the installment every month is as little as possible. Little is possible so that ज़्यादा लोड ना आए Yes, that's investor right. पे. But if the investor wants to pay it off after 1 year, there's nothing stopping them. Yeah. One thing we have in Australia is an offset account where, let's just say, we take your example, 100 rupees. Yeah. Okay. Let's just say the installment on 100 rupees every month is 5 rupees I guess. 5 rupees. Yeah. Okay. Now, if the client borrows 100 rupees, or let's just say 100 rupees, they put 50 rupees of their own money into the loan Okay. for 1 month. Okay. At the end of the month, they don't have to pay 5 rupees in installment.
they have to Okay. pay 2.5 rupees. Okay. Do you understand? Once again, repeat that thing. Okay, we're talking about a 100 rupee loan, Okay. 5 rupees a month installment. Okay. Okay, what if the client after 1 year just decided to put 50 rupees of his own money into the loan? Okay. तो जो पैसे उसने बनाए, Yes, he is putting that money into the loan. into the loan. Yes. अच्छा, okay, वही पैसे वापस उसमें डाल दिए गए Yes. जो रेंटल से कमाए थे, I guess. Yes. Okay. एंड जब वो उसमें आ गए तो अच्छा उसकी वजह से ऑफसेट वाला सीन है, I Right, guess. but one thing I haven't added, what if after 6 months he needs that 50 rupees back? Okay. He can just go to his internet banking and transfer the money back out. And when he does Can that, you repeat that thing again? Yeah. okay, so remember, originally the loan is 100 rupees, Okay. 5 rupees a month installment. Okay. The client used his own money to reduce the loan from 100 rupees to 50 rupees. 50 rupees, yeah. But originally we approved 100 rupees. Okay. Then the client needs that 50 rupees back for something else. Okay. Or maybe the rental has appreciated. Okay. He needs that money. Okay. He can transfer that money back out. Okay. अपने पैसे दोबारा निकाले जा सकते हैं. Yes, because it's liquid. liquid. Liquidity अच्छी है इसकी काफी हद तक. Exactly. Okay. 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 So that's 100% offset, but we also have the 100% offset है कि आप जितना चाहो तो वापस दोबारा भी निकाला जा सकता है. Yeah, if the client wants to put 100 rupees in, Okay. the loan is there for 30 years. Okay. 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 But if he puts some 100 rupees in, Okay. he pays 0 interest every month. एक तरह से. But then one day he needs, in 10 years' time, he needs the 100 rupees. Then the installment goes back to 5 rupees as we agreed at the beginning. Okay. एक तरह से है कि 0% हो गया इंटरेस्ट. एक तरह से because you are using that money as well for financing the main loans you have Yes. taken. Yes. I got it. I got that point now. Yeah. So then we don't need the bank's permission. You Okay. can pay off the loan down to 0. Okay. And for the next 30 years, you want to take it back out, you can take it out. Okay. So any other point 30 years के अलावा और क्या-क्या चीजें हैं? So apart from the 100% offset account, the 30 years, there is the interest only Okay. option. And then what a lot of overseas nationals don't realize, they can use their Indian rupee income here to qualify for the loan in Australia. Okay. Okay? Okay. So it doesn't affect their credit rating. Okay. Okay. if they I want got. it. Okay? Yeah. And apart from that, they can go up to 85%. 85% of the loan value. Yeah. Of the property value. Of the property. Also, okay. Yeah. 85% loan. Yeah. Basically, it's a 85% loan. That's right. Of the property value. You have to give the 25%, I guess. Yes. 25%. 15. 15%. Sorry. Yeah. 15%. It is very less. Okay. बाकी हम ये देख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है 85% तक का आपको लोन मिल सकता है ओवरसीज थ्रू यारा कैपिटल. Yes. Yeah, okay. So that's it. It was nice. Thank it was you. nice Nice to talking meet to you, and it was nice experience as well. Sure. About knowing and exploring about how finances works in overseas real estate investments. Yeah. If you've got any clients that are interested in Australian property investment Okay. and want to know how to get finance in Australia, that's where our company is situated to help them. Okay. If you are interested, तो आप देख चुके हैं, कह चुके हैं वो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं. You can talk to me for over a call, and I can guide you. I will try my best to guide you, and it was nice meeting you. Thank you. Okay. Thank you. तो चलिए वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. मैंने जैसे आपको बताया कि रेजिमैक्स वालों ने हमें चैनल पार्टनर मीटिंग में बुलाया था, जो कि हुआ था द इम्पेरियल होटल विच इज़ इन जनपथ न्यू दिल्ली. तो वहाँ पे बुलाया था, काफ़ी अच्छा इवेंट वो भी था, एंड काफ़ी सारे इंटरनेशनल हमें वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी देखने को मिले, जिनमें से 2 मेरे सब्सक्राइबर थे. कैन यू इमेजिन, लाइक मतलब एक सब्सक्राइबर तो मुझे वहीं पे मिले थे, और एक सब्सक्राइबर जो है ही इज़ माय पास्ट कस्टमर. उन्होंने मुझसे प्रॉपर्टी ली हुई है द्वारका में, एंड ही यूज्ड टू लिव इन SPR. नाउ ही इज़ लिविंग इन द्वारका एक्सप्रेसवे राइट नाउ. तो वो मुझे मिले थे. तो उन्होंने मुझे एक्चुअली पहले कहा हुआ था कि मुझे स्वास्तिक जी आप एक प्रॉपर्टी जरूर सजेस्ट करना जहाँ पे मैं अच्छा रिटर्न पा पाऊँ. और मतलब उन्हें ना बेसिकली दुबई वाला पसंद नहीं आया था, तो उनको था कि मुझे ना किसी और देश में पैसा लगाना है. तो आई रिकमेंडेड टू कम हेयर, आप इधर आइए, ऑस्ट्रेलिया का रियल एस्टेट थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए. तो वो भी आए हुए थे, एंड एक मेरे व्यूअर जेन्युइनली वहाँ पे मिल गए थे मुझे, एंड आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि लिटरली आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि ऐसा हो सकता है. बिकॉज वो मेरे व्यूअर जो है वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रहते हैं, विच इज़ द एक्सपेंसिव रोड इन होल दिल्ली NCR, जहाँ पे रिसेंटली 100 करोड़ का फ्लैट सोल्ड आउट हुआ है. जी हाँ, 100 करोड़ का फ्लैट
इन द DLF कैमिलियास प्रोजेक्ट। तो उस रोड पे जो है, जो कि गोल्फ कोर्स रोड पे है, तो उस रोड पे एक मेरे व्यूअर हैं, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा, बट ये है कि ही टोल्ड मी कि उन्होंने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हुई हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, बिकॉज मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी अमेजिंग वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल पे। अगर आप चाहें तो वो जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो या काफ़ी अच्छा लगता है जब रिकग्निशन मिलता है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस भी करी कि मेरे को एक मेरे व्यूअर भी देखने को मिले, सब्सक्राइबर देखने को मिले बेसिकली, जिन्होंने मुझे बताया कि हाँ ही यूज्ड टू वॉच माय वीडियो। एंड काफ़ी सारी कॉल मुझे अब आती रहती है, न्यूजीलैंड से भी आती है, अमेरिका से भी आती है, कतर से भी आती है, और दुबई से भी आती है कभी कभार। तो नाउ इट रियली फील गुड कि हाँ, लाइक आई फील वेरी ग्रेटफुल कि हाँ भाई अब काफ़ी सारे लोग जानने लगे हैं। सो इट्स अ साइन दैट वी आर डूइंग वेरी गुड इन व्हाट वी आर प्रेजेंट। या सो ये था इस पूरी चीज़ के बारे में। अब बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो आई गेस, पर एक छोटा सा शॉर्ट मेरे भाई ने भी बनाया था, जो मेरे बड़े भाई हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माई कंपनी अपस्किल रूट्स। तो उन्होंने भी एक छोटा सा वीलॉग बनाया था बिकॉज ही गॉट सो एक्साइटेड। सो वो भी मैं छोटा सा जस्ट 2 मिनट का है शॉर्ट, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आगे आप वो देखिए एंड उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे नई प्रॉपर्टी की वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम एंड जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव, और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के रियल एस्टेट के बारे में। अब आप सोचोगे कि अपस्केल रूट्स कहाँ कहाँ पहुँच चुका है, तो अपस्केल सिर्फ गुड़गांव, दिल्ली, गोवा या पैर इंडिया तक सीमित नहीं है, दुबई तक भी सीमित नहीं है। अब हम आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इस बारे में पूरी प्रॉपर इन डेप्थ वीडियो जो है हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। स्वास्थ्य के साथ जो वीडियोस है वो आ जाएंगी, स्वास्थ्य आ चुका है। If you wanna upscale, connect your route with us as soon as possible. Otherwise, you will regret about it. Because we are not just in Gurgaon, we are not just in West Delhi, we are not just in Dubai, we are not just in Gurgaon, India, we are in Australia now. So, नीचे दिए गए नंबर पर आज ही कॉल करें और आज ही बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में क्या निवेश करना है। We are not just in Australia as well. We are in global, 25 countries, 25 plus countries. So now upscale route is international. तो आज हमने क्या कवर किया? आज हम कवर काफी किया सारी सुबह बहुत सारी कंट्रीज के बारे में। So stay tuned on the upscale route channel. डेफिनेटली। और नीचे दिए गए नंबर पर आज ही कॉल करें, चाहे आपको दिल्ली चाहिए है, वेस्ट दिल्ली में या गुड़गांव में चाहिए, या फिर दुबई चाहिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया। So signing off, Utkarsh Srivastava. Have a nice day.